Hello bachcho, let's read the question. The question says that match the column 1 with column 2. Column 1, Magnus energy, loss of energy, pressure is same at the same level in a liquid, hydraulic machines. Column 2, Pascal's law, Archimedes principle, viscous force, and lifting of asbestos roofs. So, we'll solve this question. First of all, we'll see what will be the key concept is to solve this question. The key concept that will be used to solve this question will be Magnus effect. Magnus effect talks of difference in pressure, difference in pressure caused due to caused due to difference in velocity, caused due to difference in velocity to lift a structure, ठीक है, यही मैग्नस इफेक्ट होता है. नाउ अगर वेलोसिटी एक साइड पे, सपोज दिस इज ए रूफ, ठीक है, इधर वेलोसिटी हायर है, ठीक है, सो प्रेशर विल बी लोअर, प्रेशर लोअर होगा और इधर का प्रेशर हायर होगा, ठीक है. तो इस कारण से ये एस्बेस्टस रूफ लिफ्ट ऑफ हो जाएगा, ठीक है. दिस इज व्हाट मैग्नस इफेक्ट. सो मैग्नस एनर्जी दैट इज द real cause of lifting of asbestos roof. So A will be matched to 4. Now, second, viscous force that is resisting force, resistive force, और ये अपोज करता है मोशन, ठीक है, और ये वेट फ्रिक्शन होता है विस्कस फोर्स, इसको वेट फ्रिक्शन भी बोलते हैं, ठीक है. तो दिस ब्रिंग्स loss in internal energy. So viscous force brings loss in internal energy. So loss of energy is due to viscous force. So B will be matched to 3. Now third, pressure is same at the same level in a liquid. So at the same level in the same liquid, in the same liquid in a container, the pressure will be same. The pressure is same, and this is in according to पास्कल्स लॉ. तो पास्कल्स लॉ क्या बोलता है, अगर कोई कंटेनर है, ठीक है, उसके अगर सेम लेवल में, सपोज यहाँ पे जो प्रेशर होगा इसी लेवल पे अनदर पॉइंट है यहाँ पे, तो प्रेशर एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी. So this is according to Pascal's law. So C will be matched to 1, that is Pascal's law. Now hydraulic machines which are used to lift up heavy weights, ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन से हम हेवी वेट को लिफ्ट अप करते हैं. दे यूज द आइडिया ऑफ पास्कल्स लॉ, मतलब सेम लेवल पे प्रेशर सेम होगा इन द सेम लिक्विड, ठीक है. They use the idea of Pascal's law to transfer equal pressure in all directions, equal pressure in all directions from the free surface, to which it is applied, ठीक है. तो हाइड्रोलिक मशीन क्या करता है, वो पास्कल्स लॉ का आइडिया यूज करता है, ठीक है, to transfer the equal pressure in all directions from the free surface where it is applied. So जो D होगा that will be also matched to Pascal's law, that is 1. So the correct option will be option C, A4, B3, C1 and D1. So this will be the correct answer. Hope you all understood it well. Best of luck.